आई वेलकम सर टू दिस पॉडकास्ट। और शुरुआत हम इस पॉडकास्ट की करेंगे सर से एक मैसेज सुनने के लिए कि सर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सर Thank you. I joined the Judge Advocate General Department in 1983 as a second lieutenant. Then I retired as a Judge Advocate General of the Indian Army on 31st May 2017. Prior to that, I did my law from ILS Law College, Pune. Then I did LLM from Pune University way back in 1982. Thereafter, there was an advertisement for joining as a commissioned officer in the Judge Advocate General Department of the Indian Army, and I joined in 82, passed out in 83 from the Officer Training Academy, Madras. सर ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि कैसे आपने लॉ किया, फिर आपने मास्टर्स किया, देन यू जॉइन जैग और आपने जैग के एपेक्स लेवल को सर्व किया है। मतलब मेजर जनरल इज द हाईएस्ट पोजीशन विच अ जैग ऑफिसर कैन गेट, और वो पूरे इंडिया में एक होते हैं और सर ने उस पोजीशन में सर्व किया है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि सर की एक्सेसिबिलिटी इतनी आसानी से मिलना इज नॉट वेरी पॉसिबल। वी वर लकी एंड वी वर फॉर्चुनेट कि सर ने अपना टाइम दिया। सर इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी है कि हम आपके नाम के आगे भी जैसे बात करते हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, तो सर इन मेडल्स के बारे में कुछ अगर आप बता पाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है सिविलियन बैकग्राउंड के। जी, ये जो मेडल्स होते हैं लाइक अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ऑल दीज मेडल्स आर गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर लॉट ऑफ स्क्रूटिनी at the Army headquarters level and the Ministry of Defence. These are conferred on the service person. And these are conferred for extraordinary service rendered, exemplary service. Normal day-to-day service is not considered as such. Something you have to do, something extraordinary. Then only these medals are given. In addition to these medals, Chief of Army Staff also gives his commendation. And senior officers like Army Commander, they also give their commendation to the deserving persons. And these are after a lot of scrutiny. These medals are given. Okay. So I got this Ati Vishiswa medal, we call it AVSM, Sena medal as SM, and Vishiswa medal VSM. And then in addition to these awards, I was given Chief Army Staff's commendation once and thrice by the Army Commanders. It means in every rank I was given an award for my service rendered in the Judge Advocate General Department. करेक्ट सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि उनको हर एक रैंक पे अवार्ड किया गया था। जैसा हम जानते हैं डिफेंस सर्विस इज नॉट लाइक एनी अदर सर्विस, इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव एंड मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटीज गेट even considered there, and there to perform extraordinarily is a big thing. सर मेडल्स के साथ साथ एक और चीज़ है जिसके बारे में हम हमेशा बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है। तो अगर आप एक बार जो रैंक्स हैं जो एक जैग ऑफिसर को मिलती हैं और आपने किन किन रैंक्स पे सर्व करते हुए मेजर जनरल तक आप पहुँचे, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। रैंक्स के बारे में I joined in the rank of second lieutenant. These days the rank has been abolished. Now the state will give a full lieutenant. Thereafter on promotion you become a captain, then major, then lieutenant colonel, then colonel, then brigadier, then you become major general. Thereafter lieutenant general and general. And the highest rank in the department of the Judge Advocate General is major general. Major general, absolutely sir. Okay. A major general in the Judge Advocate General Department is known as the judicial wing of the army, and we deal all the disciplinary and legal matters in the army. We conduct various court martials. We defend the cases of the army and the Ministry of Defence before all courts, including Supreme Court and armed forces tribunals. I, as a judge advocate, conducted a court martial of the rank of Lieutenant General. And that is the highest court martial ever held in the army. That time I was a brigadier. I went as a judge advocate, and there were 7 lieutenant general as a member of the court martial. In army, court martial is akin to trial by jury. The members they act like a member of the jury. A judge advocate acts like a judge before the court martial.
Then I have served in all difficult areas. It's not that I have been sitting in Delhi only. I served in Leh Ladakh for 2 years, northeast in Nagaland. Also I have served for about 2 years. And otherwise I have served in all the places like Chandigarh, Pune, Lucknow, Absolutely. Delhi. Comparatively, you get good posting in the Department of Judge Advocate General because we are posted at the headquarters. And there are no standing court martial in the army. Wherever offence is committed, we go there and establish the court. So that witnesses are there. There is no movement of witnesses. Witnesses are there, accused is there, we go there, and on day-to-day basis we conduct the court martial. The trial which I am saying, I conducted a trial of a serving Lieutenant General, we finished within 40 days. Okay. So day-to-day proceedings are conducted in army. It's not that adjourned and then sit down. It doesn't happen like this. Unlike many other courts which happen to be outside the military area, I'm talking about the civilian courts. In addition to this court martial, I have served as the officer in charge legal cell of the Supreme Court. Means I have been dealing all the cases of the army filed in the Supreme Court, or all those cases where we have filed appeal in the Supreme Court against the High Court judgment or Armed Forces judgment. Correct. And dealt with all the cases of the army in the entire country as a lieutenant colonel, thereafter as a colonel and brigadier and of course general. Generally. All the cases of army personnel before these courts. Correct. So I have got ample experience of not only dealing with the court martial, but defending the cases in various courts also. Absolutely, sir. And furthermore, it's not that in army we deal with only with the Army Act. Under the Army Act, all offences committed by service personnel violating any law for that matter, IPC, Corruption Act, any act, these offences are deemed to be offences under the Army Act. So we deal with all sort of cases. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझ में आ रही है, जो सर आपको बता रहे हैं कि अगर आप जैग में जाते हैं तो ये बात सच है कि जैग के इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस में आपसे लॉ नहीं पूछा जाता, लेकिन एक जैग ऑफिसर के तौर पे जब आप सर्व करते हैं तो आपको सारे लॉज को कवर करना पड़ता है, बी इट क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, बिकॉज एनी ऑफेंस आउटसाइड द कैंटोनमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस इनसाइड द कैंटोनमेंट. सर, दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी स्टार्ट ऑफ योर जर्नी कि आपने जब एसएसबी करी तो आपके एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि आपके एसएसबी के एक्सपीरियंस से शायद हमारे लर्नर्स को बहुत आइडिया मिले कि कैसे एक्चुअल में इस एसएसबी को क्रैक किया जाता है, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो लाइव में आके ये बताते हैं कि पिछले 7 अटेम्प्ट से 8 अटेम्प्ट से हमारा एसएसबी क्लियर नहीं हो रहा है. Actually, difference between selection in the army and civil is only one. That is, in the civil service, they select the best. Correct. Best in the sense, suppose there are 100 vacancies. Correct, sir. Even if 100, the last one, has got 20 marks out of 100, he'll be selected. Absolutely. But in army, navy, air force for that matter, selection is based on whether the person is suitable, eligible, and correct or not. A correct person they select who is fit to become an army officer. So, and there is no difference in the SSB for JAG or for any other service. SSB remains the same. There is no difference in that, and there is no relaxation that you have come for the JAG entry. So let's relax the procedure. No, it's the same procedure. Training remains the same. For JAG and other entry, training remains the same. Thereafter, after you join the JAG department, the procedure changes in the sense that then we teach such officers the military law, because they have not read the military law. Absolutely, sir. They have read all other acts and not the military law. And you will be surprised, there is no preparation required for SSB. When you join a JAG entry, there is no written test. It is based on your marks secured in the LLB. You are called for interview. And the first day there is screening test. You will be asked to appear before intelligence test, verbal, non-verbal. Then they will show you a picture for 30 seconds. And then within 3.5 minutes or so, you have to write a story on that. Write a story on that. Thereafter, there will be discussion.
about that whatever you have written. That discussion will be in a group. Then they'll declare the result. That is known as screening test. Screening test. Suppose 130 candidates have appeared. It may be that they'll take 30 or 40 candidates. Rest will go. And 30-40 candidates who have cleared screening, they'll be put to test for 4 days. And there are 3 different types of officers. Psychologist will test your psychology, whether you are fit to become an army officer or not. And that is by way of, earlier they had shown you one picture. Now again there will be intelligence test. They'll show you about 10-12 pictures immediately, one after the other. Then the known as words association test, 60 words they'll show you. And they'll give 15 seconds to write a sentence on that. It's not the question of English. After seeing that word, what comes in your mind? For example, enemy. After seeing that word enemy, what comes in your mind that you write? Friend. What comes in your mind when the word friend appears? Okay. Father. What comes in your mind when you hear this word father? Father, an object of respect. Mother, an object of love and affection. Correct. What comes in your mind? After they will give you 60 situations, and you have to write your what do you feel? How do you react to that situation? Correct. For example, you are going for appearing in an interview, and you require that job. But the way you find road accident, a person has been seriously injured, is bleeding. What will you do? Correct. Then you have to write all your reaction in that. Absolutely. Whether you will go there for that interview or you inform the interviewing officer that you will be late, whether you will remove that person to the hospital, whether you will contact his parents. Correct. Absolutely. And thereafter you go. So, and then you write the self-assessment test. What your friends think about you, what your parents think about you, what your teachers think about you. Correct. What do you think about yourself? And your weakness and strong points. Strong points. Correct, sir. These are psychologist tests. The psychologist will assess you whether you have those qualities of becoming an army officer or not. They are not concerned here whether you are JAG officer or not. Then same thing will be tested by another officer. That is known as a group testing officer, GTO. He will test you on ground whether you have got these qualities. Same qualities, Yeah. but test will be different. For example, they'll give you a group discussion, electorate. They'll give 3 topics. On one topic you have to select it. Then certain practical test. And they'll give good planning. For example, you 6-7 friends went for a picnic. And when you are just sitting there, you reach the spot, somebody came from a village. The tiger has come and the tiger has taken away one boy. Meanwhile, another person came. There are people who are removing the fish plate and train is about to come. Again, somebody else came. That Dakus have entered the village and they are kidnapping the women. What will you do? Make a group plan. Then you write your plan. I'll do like this. I will distribute I'll have 3 groups like that. And he will do like this. He will do like this. I'll do like this. So plan. Then there will be discussion on that plan. Correct. Similar tests. So these are tested by then you'll be made a commander. Okay, this is the problem. You are the commander. You call any of your friends and you have to, what will be your solution to this problem? These are all practical problems. Correct. So these are assessed by group testing officers. Meanwhile, you will be called for interview by senior officer. He will assess you based on verbal interview. Correct. So psychologist has tested you psychologically by way of written test. Group testing officer has assessed you based on your actions in a group. Correct. And interviewing officer tested you verbally.
Verbally. 1-to-1. They are not met each other. Correct. In the end, there is a conference, and then all three meet, Correct. and they call the candidate. Then they discuss about the candidate. According to me, he is suitable for this. He has got these qualities. Somebody say, okay, all right, but he is selfish. Then they'll ask you, the person who finds he is selfish, he'll ask you a question in the conference about that to clear his doubt. If you clear the doubt, you will select it. If you are not clear, then you are borderline case, you will not be selected. मैं इसके बीच में थोड़ा सा रोक के आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ क्योंकि आगे मैं भूल ना जाऊँ. ऐसी कुछ 2-4 क्वालिटीज़ जो आपको लगता है कि किसी कैंडिडेट के अंदर होती है, बाय डिफ़ॉल्ट हो या उसने अपने अंदर डेवलप करी हो, तो वो हमेशा हेल्प करेगी एसएसबी में. कुछ ऐसी क्वालिटीज़? हाँ, फॉर एग्जाम्पल टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट. Courage. Team spirit, suppose you play games. So you naturally will have team spirit. करेक्ट. We have been using this. करेक्ट. These qualities which are tested in SSB, these can't be acquired by reading books. एब्सोल्युटली सर. You have to change your attitude. If you never even organized any event in your college or university, they will be asked to organize some game, some match, or some function. करेक्ट. So if you have not done any activity in your college, how will you organize those things? एब्सोल्युटली. Then you see, that's why the person who plays games, etc., or take active part in all those events, they are better suited because they have all these qualities. Yeah, they have exposure to. They have exposure to these things. Correct. So these are the things which are required. And finally, there will be a medical. All those selected candidates, say out of 30, 2-3 are selected. They will be put to rigorous medical examination. And you will be tested by all specialists. जी. First there will be, all the blood tests, everything. Then dental examination by dental specialist, surgical specialist, medical specialist, all ENT specialists, eye specialists. You will be subject to various tests. After that only you are through, you have selected, then they will make a merit list. Merit list. As I said, they only select the correct person. If there are 10 vacancies, a correct persons are say 50, they'll select all 50. But they'll make a merit list, first 10 they will take it as per the vacancies. Correct. And if you have been selected and you are not in the merit, it doesn't mean that you will be taken in the next course. Next course again you have to appear. Correct. You have to clear all these tests again. There may be chances that you may be rejected next time Yes, sir. because you have changed your psychology meantime. करेक्ट. तो ये बात आप सभी लर्नर्स को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि आर्मी के लिए आपको कोई किताब पढ़ने की या जैग के एंट्रीज में जाने के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू करिए और वो धीरे धीरे खुद आपके अंदर इनहेरिट हो जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर ने जो बात बताई वो मुझे भी बहुत ज़्यादा हिट करी. वो बात ये है कि आर्मी करेक्ट लोगों को लेती है, मेरिटोरियस को नहीं. मतलब उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरिट में कितने आते हैं. वो अपनी वैकेंसी के हिसाब से आर्मी में सिलेक्शन नहीं होता. आपकी क्वालिटी और आपकी आर्मी की जो सूटेबिलिटी है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है. तो ये एक ऐसी बात है जिसको लेकर शायद हमारे लर्नर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. And furthermore, I want to clarify one thing: there is no reservation या based on caste, etc. Yes, there are vacancies reserved since women have started coming. यस. So there are say 7 vacancies for women, 10 vacancies for men. जी. But it is not reserved based on your caste. जी. And even if there may be misconception that army officers, children, they only go they only get through, is not so. करेक्ट. In fact, the sons and daughters of senior army officers are put to rigorous test. Thinking that they must be knowing these things, at least they have got all opportunities. एब्सोल्युटली. But the children of lower rank or civilians, they give some sort of relaxation to those because they were not exposed to all these opportunities. एब्सोल्युटली सर. So there are cases, there are so many sons and daughters of lower ranking other than officers. They are commissioned officers. एब्सोल्युटली. It's not so. And tests are very fair. करेक्ट. You can hoodwink one person, assessor. You can't hoodwink all 3. करेक्ट. And I have seen it since I was in the military secretary branch where I had access to
the dossier of these officers, I've seen it. The marks allotted to all three assessors are equal. Presiding officer, that interviewing officer gets more marks. And their assessment will be like this: out of 360 marks, somebody has given 87, other assessor given 90, other has given 92. I have never seen any wide variation. It means tests are they assess you properly. करेक्ट, मतलब जो भी टेस्ट हो रहे हैं इसका मतलब वो तीनों ऑफिसर्स अलग अलग टेस्ट ले रहे हैं आपका और तीनों के मार्क्स सेम है, इसका मतलब उनका असेसमेंट का लेवल कितना Same in the sense, not very wide variation. हाँ, similar. 87 say 90, 92, like that. करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो सर हमने इसके बारे में भी बात करी। अब एक ऐसा सवाल है जो हर एक लॉ एस्पिरेंट लाइव में आके हमसे ये पूछता है कि सर ज़्यादातर बच्चों ने LOC कारगिल मूवी देखी है, किसी ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, और वो उनके आर्मी का परसेप्शन वही है कि आर्मी में अगर गए तो हमें बॉर्डर पे जाके लड़ना होगा और वहाँ अगर हमें कुछ हो गया तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ कि एक जैग ऑफिसर की सर्विस प्रोफाइल कैसी है और वो कैसे काम करते हैं। I'll just tell you what Macaulay said. ओके, As I read it. श्योर। What Macaulay said: to every man upon this earth, death comes sooner or later. यस सर, And how can a man die better? Facing fearful odds for the ashes of his father and the temple of his gods. वेरी So it's not that if you join army, then there are more dangers to your life, and if person dies, he will die. या So yes, at times there are risks. There is no doubt. But JAG department officers are not put to that much risk because we get comparatively better posting. We go to headquarters. Yes, in the beginning, when you become commissioned officer, that time for earlier 1 year, now it is 1.5 years, you are sent to infantry battalion in field areas. There you are sent to know how soldiers live, what is the commit offenses. करेक्ट, Then only you will be able to do your duty properly. एब्सोल्युटली। Women officers are sent to Jammu and Kashmir Regimental Center at Srinagar, one place. Whereas officers, other than women officers, they are sent to various places. Like I went to Rajput Regiment, and that time it was in Arunachal Pradesh, on the border of China, करेक्ट, known as Hailiang. I was supposed I served for 1 year there. Then I came to Shimla, attached with the office of the Deputy Judge Advocate General, so that you learn about the military law. मिलिट्री लॉ, करेक्ट, Then we are sent to our center, Army Institute of Law, at Nagpur, Kamptee. There were 3 months young officers course you have to undergo. Then you get proper posting. So we are not exposed to that risk. करेक्ट, करेक्ट, We are not exposed to that risk in comparison to other persons. But we are also posted in field area. It's not that if you are a JAG officer, you have nothing to do with the war. It's not so. करेक्ट, It's not so. We also take part. When I was posted in Nagaland, and there was a war scenario building up in 1990. That time from Dimapur, we went in by special train and went to Naglota, J&K. So first we are soldier, then we are lawyer, as a JAG officer. But we carry out all duties, routine work, PT, medical examination, everything is done. Because first of all, we are soldiers. करेक्ट, करेक्ट। तो ये बात सर ने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। उन्होंने जो कोट हमें बताया कि इफ़ एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे, एंड अगर आपको ये मौका मिले तो देयर इज़ नो बेटर थिंग देन टू डाई फॉर द नेशन एंड इन द यूनिफॉर्म। दूसरी चीज़ कि एक जैग ऑफिसर इस तरह से एक्सपोज नहीं होता है जिस तरीके से बाकी ऑफिसर्स होते हैं। दे आर मोस्टली पोस्टेड इन द हेडक्वार्टर्स एंड ऑल्सो दे ऑल्सो नीड टू गो थ्रू अ ट्रेनिंग। उनको एक ऐसी ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है जो एक कमांडो की ट्रेनिंग हो या फिर एक जो नॉर्मल इन्फेंट्री ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो। साथ ही साथ कुछ समय आपको उन लोगों के साथ भी बताना होगा जो एक्चुअल
मार्शल में बॉर्डर पे सर्व कर रहे हैं ताकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएं, उनके ऑफेंसेस को समझ पाएं। तो ये एक काफ़ी अच्छा इंसाइट है। ये आई थिंक आप सभी लोगों को हेल्प करेगा समझने में कि जैग की सर्विस प्रोफाइल है कैसी। जैग में अगर आपको जाना है तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये कैसे काम करता है। लेकिन एक और चीज़ है जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, वो ये है कि जैग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोर्ट मार्शल। और कोर्ट मार्शल मूवीज़ में जिस तरह दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, उसमें बहुत अलग चीज़ें बताई जाती हैं। कोर्ट मार्शल क्या है और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में अगर आप कुछ लर्नर्स को बता सकें। Court martial, in holding court martial, the department of the judge advocate general plays an important role. It's not that for every offence we put a person before a court martial. It's not so. Correct. There are various other avenues. Correct. There are various other procedures where we take administrative action, some sort of summary trial like that. Only serious offences are sent before a court martial. Only serious. And prior to sending a person before a court martial, these documents are examined by the Department of Judge Advocate General. When they are convinced that there is a plenty of evidence, prima facie case made out, and offence is such serious which needs to be tried by a court martial, then only those cases sent for a court martial. Okay. That's why they say conviction rate is very high before a court martial. In civil, conviction rate is not high. It means we are very, very, very serious as far as these cases are concerned. That's why conviction rate is more. Correct. It's not so. Conviction rate before a court martial is more because we examine prior to court martial. Okay, yes, there is evidence. Correct. And witnesses, they are mostly soldiers. They don't turn hostile. Very few they turn hostile. Correct. So unlike civil, Correct. हाँ नहीं, सिविल में तो there are plenty of witnesses which are not so in the army. Correct. Because offences are committed in the cantonment or somewhere. So it's very, very difficult to plant witnesses. We know who has done what. Correct. And then there is proper scrutiny before a court martial. Correct. Before a court martial is convened. After a court martial, and at the court martial, officer of the judge advocate general department goes as judge advocate. He ensures that proper procedures are followed. After the court martial is over, these proceedings are examined again by the department of judge advocate general, not that officer who has advised court martial, but some other officer who is not concerned with it. Correct. To check with it. To check and whether proper procedures have been followed. There is sufficient evidence. And to avoid command influence, the opinion of the junior-most officer is taken whether he is guilty or not guilty. What punishment to be given, opinion of the junior-most is taken, the next senior. In the end, opinion of presiding officer is taken, whether guilty or not guilty, what punishment to be given. So that there is no command influence. Correct. There is no command influence. दिस इज़ अ बिग इनसाइट। ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो सर ने बताई, क्योंकि हम जो मूवीज़ में देखते हैं ये वैसे ऑपरेट नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कन्विक्शन रेट की अगर आप बात करें, हो सकता है बहुत सारे आप में से लोगों को ये बात ना पता हो, लेकिन हमारे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स में जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी लो है। और उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे केसेस सीधे कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद हम उसको देखना शुरू करते हैं। सर ने बताया कि पहले प्राइमा फेसाई ये चेक किया जाता है कि कोई भी मामला कोर्ट मार्शल के लायक है या नहीं, और इसीलिए जब ये बात लगभग तय हो जाती है कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एविडेंसेस हैं, उसके बाद ही वो मामला कोर्ट मार्शल के लिए जाता है और उसके बाद ही ये चीज़ें तय करी जाती हैं, ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाती है। और इसीलिए हॉस्टाइल विटनेसेस जैसी सिचुएशन भी नहीं आती है, बिकॉज इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड फर्दरमोर जब हम कोर्ट मार्शल कन्वीन करते हैं तो ये प्रोसीडिंग प्रॉपर तरीके से एग्जामिन होती है। ऐसे नहीं कि हमने चलो आगे नीचे से किसी ने कर दिया रिकमेंड तो उसका कोर्ट मार्शल कर दो, ऐसे नहीं होता। ये इस फर्दरमोर आर्मी में क्या है कि जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू जस्टिस टू द सोल्जर्स। वाई? बिकॉज सोल्जर दे मेक सुप्रीम सेक्रीफाइस on the verbal orders of the superior. Correct. Even a verbal orders, if it is given by superior officer, Absolutely. the soldier makes supreme sacrifice. They lay down their lives. Correct. ऐसी सिचुएशन में उनके साथ जस्टिस करना बहुत जरूरी है। Officers cannot be partial.
they have to be absolutely impartial. Then only soldier will make supreme sacrifice on your orders. Correct. Otherwise, who is going to make supreme sacrifice? So an army officer or the officer of the Judge Advocate General Department have to be absolutely impartial and very fair to the soldiers. Correct. Because this is very, very important role which the officer of the Judge Advocate General Department perform. करेक्ट, एब्सोल्युटली सर. एक और सवाल है सर हमारा. वो सवाल जो है वो मेरे मन में भी है और बहुत सारे लोगों के मन में भी था. खैर मेरी आपसे बात हुई तो मेरे मन में तो ये डाउट्स क्लियर हो गए, लेकिन आपके भी क्लियर हो जाए. सर एक इन्फेंट्री ऑफिसर यानी कि वो जो CDS की एंट्री के थ्रू जाते हैं और एक जैग एंट्री के ऑफिसर की जो वर्क प्रोफाइल है उसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क अगर आप बता देते कि कैसे वो उनकी वर्किंग अलग है, मतलब उन दोनों के बीच एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दें. क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनके फैमिली में भी अगर कोई डिफेंस में है या उनके फ्रेंड में भी है तो उन्होंने ND या CDS परस्यू किया है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकते. ये जैसे फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट एंट्री होती है, जी. डायरेक्ट गो टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी आफ्टर क्लियरिंग CDS, वो थ्रू NDA जाते हैं आफ्टर 12th. देन दे फर्स्ट गो टू NDA 3 years, देन कम टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी. एंड JAG officers, they go direct, they appear before the SSB. You cannot become an officer in the army without clearing SSB, except medical officers. They have to clear SSB and there is no laxity given in the SSB कि JAG वाला है, ये infantry में जाएगा, ये जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. Yes, work profile, everybody has got different work profile. There are three. One is combat arm. Combat arm means infantry, mechanical infantry, armed corps. Those who operate tanks. Then there is a sport combat arm. Which are those sport combat arm? Signals, engineers, army air defense and artillery. They are sport. Support units. Sport, command sport. Commands. Arms. They are not arms. Other is services. Army Service Corps, Army Ordnance Corps, like JAG also, service. They are not armed, they are service. They provide service. And in all they join together. Without communication, you can't fight war, infantry. Absolutely. Because communication system will have to be there. Engineer, they make bridges over a river or plants, mines, other things. Without that, they cannot. So work file of every arm is different. Infantry, to combat arms, infantry, mechanized infantry, armored corps, yes, they are more into combat. Combat sport also, they are very near to them. Service is slightly different. They supply arms, of course, ration, medical services. These are services. They provide services to them to fight. But everybody has got their own role to play. सर एक और सवाल है हमारा. ये सवाल हमारे लिए वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस में से है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली ये सवाल मेरे लिए पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मेरे अंदर की एक्साइटमेंट से निकल के आ रहा है. अगर मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, क्यों मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है. जैग में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो एक मेजर जनरल की होती है. मेजर जनरल कोई एक ही ऑफिसर होगा जो बनेगा, और आपको अगर ना पता हो तो SSB में जो शॉर्ट सर्विस स्कीम होती है, यानी कि आप कुछ समय के लिए जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पे ही आपको आगे का एलिवेशन मिलता है. और यहाँ तो सर ने एज अ जैग सर्व किया है. तो सर एक मेजर जनरल जो जैग के होते हैं वो कैसे सर्व करते हैं, एक बार बस उसके बारे में आप हमें बता दीजिए कि एज अ मेजर जनरल आपका जो एक्सपीरियंस रहा. एज ए मेजर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, एज ए जज एडवोकेट जनरल, you are advisor to the chief of the army staff on all matters, military matters and international matters on martial law, and to other officers to maintain discipline. And Judge Advocate General, highest officer, and every officer of the Judge Advocate General Department, he represents the Judge Advocate General at court martials. He is a representative of Judge Advocate General at every court martial. Correct. He is answerable to the Judge Advocate General. And Judge Advocate General is the overall in charge of entire legal team. Whatever happens in the army. Correct. Because what happened in army, a person say a soldier commits an offense, say civil offense.
road accident, or he commits any other offence for that matter, the first option or first right is to try him by a court martial. Correct. Civilian magistrate will not take cognizance unless until he asks the opinion of the commanding officer. Whether you'll try or I'll try. I'll try. First right to try such a person is of army commanding officers. 3 offences are which we cannot try. One is murder of a civilian, rape of a civilian, a culpable homicide of a civilian. But we can try these cases also, provided they are committed within the active service. Okay. Active service means there are areas specified, like in J&K, complete active service. Northeast is active service. So if a soldier commits an offence of a civilian in those areas, first option is army. We will try. And it's not that before a court martial, advocates, they don't appear. Advocates, they appear. You can engage anyone you feel like. Okay. Justice Chief Justice of India, who had been Chief Justice of India, Justice T.S. Thakur, Yes. he had appeared before a court martial as a defense counsel Okay. in a Samaswai case. And the case was still pending. When he became a Chief Justice of India, this case went before him. He says, I recused myself because I was the defense counsel at the court martial. Those years, case is still lingering. Case was still lingering in the civil courts. So we take action very fast. Correct. And very fair system. Correct. I can say very, very fair system. Since I served in this department for 35 years, I've done a lot of court martials. Court martial, trial by court martial is very, very fair. We record each and everything, and very meticulously we'll deal with these things. Very meticulously. And yes, in the army, we are not that harsh in punishing people, except unless until there is serious offense of spying and all those things. Correct. Because we try our own men. Correct. It doesn't happen like civil, judge doesn't know the civilian accused who has committed an offense. But we know. Correct. Because he has served with us only. We know the conditions, we know the family. Correct. If we don't know the particular person as such. Yes. But we know. If he's other than officer, whether he's an officer, what is the standard of living of that person, Correct. family kya karte, we know each and everything, all these things. दिस इज वेरी ग्रेट इनसाइट कि आपको ये भी पता चला कि मेजर जनरल जो होते हैं वो ही इज द फेस, वो मेन अथॉरिटी है जिनके बेस पे सारे जैग ऑफिसर्स काम करते हैं. दे रिपोर्ट टू देम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शायद ही हम में से किसी को ये बात पता थी कि एक नॉर्मल एडवोकेट भी कोर्ट मार्शल में खड़े होते हैं. और उसका एक सर ने एग्जाम्पल भी दिया एक चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर सर का. ये काफ़ी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल इंसाइट था सर. एंड ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए आखिरी की 2 सवाल हैं छोटे छोटे. सबसे पहला तो ये कि अब आप एक फुल टाइम एकेडमिशियन हैं और अब आप लीगल माइंड्स को नर्चर कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं. तो ये शिफ्ट आपके लिए कैसा रहा आर्मी से एकेडमिक का, और दोनों आपको सर्विस प्रोफाइल्स के बीच क्या फ़र्क लगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एकेडमिक्स भी परस्यू कर रहे होंगे. ये भी एक बच्चों को आप थोड़ा गाइड करते हैं इन दोनों जर्नी के बीच का ट्रांजिशन. शुरू में जब मैं इनफैक्ट दिस माई 8th year एज ए एकेडमिशियन, एज ए डायरेक्टर ऑफ द लॉ स्कूल. इन द बिगिनिंग थोड़ा मैं वाज स्लाइटली कंपैशनेट मोर टुवर्ड द स्टूडेंट्स. इफ समबडी इज से लेट फॉर एग्जामिनेशन 5 minutes 10 minutes, तो आई टू परमिट कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा लेट हो गया हुआ. आई वाज स्लाइटली कंपैशनेट बिकॉज इन आर्मी ऑल्सो वी compassionate towards the student children basically. But then I realized that they are taking advantage of the situation. They are taking it that अपने director is compassionate है, lenient है. Then I became slightly strict. Yes. And then timing का मेरे को, because in army में if say required time is 9 o'clock, we will there 5 to 9. बट यहाँ पे बच्चे थोड़े लेट आते थे, क्लास में लेट आएंगे, दे आर नॉट दैट सीरियस अबाउट स्टडीज. देन आई एज ए द डायरेक्टर यूज्ड टू फील कि व्हाई दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज, व्हाई दे आर नॉट कमिंग इन टाइम. ये थोड़ा टाइमिंग का मेरे को थोड़ा सा लगा कि टाइमिंग में क्यों नहीं है. देन प्रॉपर ड्रेस सेंस,
बिकॉज इन आर्मी देर इज प्रॉपर ड्रेस सेंस होता है, बट सिविल में क्या ड्रेस सेंस नहीं, कैसे कपड़े पहन के आगे, करेक्ट ग्रूमिंग एज सच नहीं है। तो मेरा इसमें थोड़ा मेरे को लगा टाइम, ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ा लगा कि वाई दे आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड, वाई दे आर नॉट प्रॉपरली ग्रूम्ड अप, करेक्ट and why they are not coming in time, why they are not doing their homework, and why they are taking things lightly. करेक्ट ये मेरे को थोड़ा लगा। बाद में तो then I also realized कि भी this is where the culture is, but I have been telling them, you follow proper procedure, follow proper etiquettes, and I could have practiced also. But then I thought कि after my experience of 35 years in army, I must give it to the students community at least, whatever I've gained experience, because there are four sort of profession: teacher, preacher, doctor, soldier. These are not merely profession. There is a way of life. We have to get involved in this thing. So teaching is very noble profession. Soldiering is also noble profession. From one noble profession, I come to another noble profession. Earlier, I was a soldier. करेक्ट Now, I am a professor. करेक्ट But once a soldier is always soldier. You can retire a soldier from army. You cannot retire army from a soldier. एब्सोल्युटली सर, एंड दैट इज़ वेरी एविडेंट विथ यू ऑल्सो सर कि मैं नॉर्मली जब कहीं जाता हूँ तो मैं आई एम लिटिल कॉन्शियस व्हाट आई एम वेयरिंग, बट आई वाज वेरी श्योर कि वॉट एवर आई वेयर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विल बी सर, एज यू कैन सी कि दिस इज़ द वे दे कंडक्ट एन आर्मी पर्सनल। और इसलिए मैं आज सेशन में भी बच्चों को यही बता रहा था, मेरा एक इंट्रैक्शन हुआ एमिटी में, तो मैंने यही बताया कि एमिटी लॉ स्कूल ग्वालियर के बच्चे बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आना चाहता था, मैं आ नहीं पाया किसी और रीज़न की वजह से, केवल सर की वजह से, क्योंकि दो चीज़ें, आर्मी से ज़्यादा डिसिप्लिन कोई यूनिट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारे देश में, और दूसरी कि आप जैग ऑफिसर के जो सबसे एपेक्स लेवल पे सर्व कर चुके हैं, उनके साथ आपको सामने बैठ के सीखने का मौका मिल रहा है। हमारे लर्नर्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहा। आई होप वो इससे कुछ सीखें और इस सर्विस में जाने की कोशिश करें। मैं एक चीज़ और बताऊंगा इसमें। Since I told, as I said, this is my 8th year in the Amity Law School, I find the students of Amity Law School are very good. Yes. They are participating in various events, and they are beating even National Law University students. Correct. And the student who just joined in the first semester after 12th, they are participating in client counseling competition, as they are winning awards. Correct. I was surprised when I got, you are in the first semester. How will you participate in client counseling? We are not told you anything. But they said we want to participate. Then we took a session. Correct. And they got first prize. Absolutely. And every day somebody comes to me, sir, we got first prize in the moot court competition. Yes, sir. There are 40 teams, and we won the first prize. Absolutely. And perception of Amity Law School is very, very good. Yes. Because we conduct various events like Model United Nations, client counseling competition, youth parliament, Correct. all those events at national level, and the students from all over the country, from Srinagar to Kanyakumari, they all come and participate offline. Absolutely. And they appreciate the Amity Law School and Amity University, Madhya Pradesh as such. And I'm proud of the students of law school. Absolutely. सर मैंने भी इंटरेक्ट किया एमिटी लॉ स्कूल ग्वालियर में, एमिटी लॉ स्कूल एमपी, तो मैंने भी एक बात रियलाइज़ करी कि नॉट ओनली दे आर वेरी मच एंथुसियास्टिक टू वर्क, बट ऑल्सो दे आर हाईली एस्पिरेशनल टुवर्ड्स दिस लीगल प्रोफेशन, एंड एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि दे आर वेरी मच ऑफ द क्वालिटी, दे आर क्वालिटी स्टूडेंट्स, वो क्वालिटी होल्ड करते हैं, और उसके साथ ही साथ दे हैव द बेस्ट मेंटोरशिप दे कैन एवर गेट। सो compliments and congratulations to all the Amity Law School staff, students and the administration. सर एक और हमारा सवाल है जो कि बहुत सारे बच्चों को एस्पायर करेगा, शायद ये चीज़ तुरंत मोटिवेट कर दे, क्योंकि आर्मी जितनी डिसिप्लिन है उसके साथ ही साथ वेल पेड भी है। तो सर आर्मी में सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है एक ऑफिसर का, आप वो अगर बता पाएंगे। Salary structure is very good in army. It's not that officers of the infantry or combat arms or combat sport they paid more. It's not so. Basic pay, everything remains the same. Lieutenant, whether you are from infantry or from JAG or of any other arm, they are paid equally, except medical officers.
because they get non-practicing allowance. There's a difference. And then depends on your allowances. They differ. In the sense that mandatory, which are everybody gets, like kit maintenance, rank pay, free ration, then everybody gets it. Correct. Then suppose you are posted in a particular area, say Shasang Glacier, you will get more allowances. You are posted in active service area like J&K or high altitude, then allowances are more correct. for that person. Then a person who is sitting in Delhi, he will get more allowances. So allowances differ. But in addition to your basic pay, you get DA, you get ADA, then kit maintenance allowance, then transport allowance, and married accommodation at concession rate, then medical facilities, then if you go from one place to another place, then the guest rooms, Correct. Traveling allowance. So, sir, sorry to interrupt in between. If you are comfortable and if we can talk about it officially, roughly how much a lieutenant or a captain gets in the Indian Army? Roughly, say, a lieutenant, when he passes out, he'll get a lieutenant starting pay will be 1,15,000 or 1,20,000. And while under training, they get the pay of second lieutenant. Okay. So when they pass out, they got ample money with them. That's why they go for a luxury car immediately after they're passing out. Yes. When they pass out, they get. And then various sports facilities at cheap rate, canteen facilities, various other facilities. Correct. It's not that I've stayed in the army, so I'm saying so. I got two sons, both are army officers. Correct. Both are army officers. And both are posted in J&K. Elder one is posted in Rajouri, which is a very, very Active hot, military. very active area where terrorism takes place. Correct. And younger one is posted in Jammu. My daughter-in-law is Air Force pilot. Oh. She is also posted in Jammu. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देता है कि कई लोग ये एक्यूज करते हैं यूट्यूब पे वीडियोस ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं आपको डिमोटिवेट किया जाता है ये बता के कि आर्मी बैकग्राउंड में जो है आपको वो नहीं मिलता आपको बताया जाता है लेकिन सर के जो दो सन हैं वो दोनों आर्मी में सर्व कर रहे हैं सर की डॉटर इन लॉ भी आर्मी में है यानी कि अगर कोई आर्मी में इतने एपिक्स लेवल पे सर्व करने के बाद भी अपने चिल्ड्रन को अपने बच्चों को अगर आर्मी में भेज रहा है दैट सिंपली मीन्स कि इट इज़ अ गुड सर्विस इट इज़ अ वेरी ग्रेट सर्विस और दूसरी चीज़ जो मुझे अभी एक नहीं पता चली है मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चल गई थी सर से सेशन में बात करते हुए लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रफली 1,50,000 इज द सैलरी जब आप कमीशन ऑफिसर बनते हैं एज अ फुल लेफ्टिनेंट 1,15,000 to 20. हाँ सो मतलब 1,15,000 20,000 के आसपास लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको एक्यूमुलेट करके पूरा पे किया जाता है एक सेकंड लेफ्टिनेंट का पे कमीशन इसका मतलब हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है और जब आप फाइनली पास आउट होंगे तो एक बल्क में आपको वो सैलरी को पे किया जाएगा कि ये आपकी वो सैलरी है जो आपने ट्रेनिंग के दौरान अर्न करी यानी कि डे 1 से जब आप सेलेक्ट होते हैं जब आप ट्रेनिंग अकेडमी जाते हैं तो आप अर्न करेंगे एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट प्रोवाइडेड टू एनी अदर सर्विस कुछ ऐसी सर्विस है सिविल सर्विसेज जहाँ पे ये चीज़ होती है बट स्टिल जिस लेवल पे आर्मी में दिया जाता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है अपने आप में आई थिंक आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि डिफेंस सर्विसेज ना केवल एक डिसिप्लिन्ड और बहुत ही ज्यादा हाईली डेकोरेटेड यूनिट है एक बहुत ही हाईली डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ही साथ वेल पेड भी है एंड सर you get free ration. Free ration, correct. And there is no income tax on that. Income tax. Free ration means you get everything, from cooking gas Correct. to all those condiments, bread, butter, milk, cheese, jam, Correct. everything you get it. Correct. So that is given to every officer, whether you are posted in field area or peace area. The free ration is given. Correct. And furthermore, let me tell you, many people don't know. We are all commissioned officers. We are not appointed by the government. We are given commission by the President of India, who is the Supreme Commander of the Armed Forces. Armed forces. And what is commission?
commission is earlier kings and used to fight war. Maharaja Ranjit Singh, Maharana Pratap, you see all the kings used to fight. Then princes started fighting. Then wars became more. Then they started selecting all those people whom they have got complete faith, trust, their loyalty and fidelity was beyond reproach, the courageous, all those people they identified, and they started giving commission to those. You fight for us. You fight for us. That's why when every officer get a parchment, is a commission by the President of India, and he writes in that parchment, the President of India, that having reposed full faith in your fidelity, in your loyalty, in your courage, I therefore direct you that you follow all my orders and the orders and commands of your superior, even to the peril of your life. And you will go by air, road and sea, wherever you are posted. And I also direct all those who are placed under your command. They'll pay similar respect to you, they'll obey all your orders. And this is signed by the President of India. Every officer gets it. So that is what the commission is known. And that distinguishes armed forces services from civilians. So we are the representative of the government. करेक्ट. सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बात आपको पता चली, ये बात मुझे अभी अभी पता चली है कि कमीशन ऑफिसर का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं भी अभी तक यही समझ रहा था कि कमीशन ऑफिसर इज समथिंग मींस कि जो आर्मी में कमीशन हो गए, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप राष्ट्रपति के द्वारा कमीशन किए जा रहे हैं एंड जो इंस्ट्रक्शन सर ने बताए वो बताए जाते हैं. दिस इज एन एब्सोल्यूट इंटरनल नॉलेज जो मुझे अभी बाय द ग्रेस ऑफ सर मुझे अभी पता चली, क्योंकि शायद अगर मुझसे कभी ये पूछा जाता सवाल तो शायद मैं इसका जवाब कभी नहीं दे पाता. एंड सर आखिर में इसका जवाब सर हिंदी में अगर हो गया तो एक आखिरी सवाल है सर से. सर आर्मी की अपनी कोई एक मेमोरेबल स्टोरी या कुछ भी ऐसी कोई जर्नी का पार्ट या कुछ भी ऐसा जो आप लर्नर्स के साथ शेयर करना चाहें. बाहर मना कर दोगे, आवाज ना करें. यू कैन आंसर सर. यू कैन आंसर. या पहली बात तो I got posted to various places where had I been a civilian I would not have visited those areas. As a lieutenant I went to Arunachal Pradesh, earlier known as Nepha, that is on the border of China. And we could observe Chinese people working. That's absolutely on the border. And that area was so difficult that there was not even a mule track. You have to walk 10-15 kilometers, and नीचे if you see the Lohit river होगी, that is Lohit is ब्रह्मपुत्र का tributary है. And वहाँ पे एक दूसरी जगह जाओगे जो ब्रिजेज हैं वो लकड़ी के बने हुए हिलते हैं टूटे फूटे, उनके ऊपर से गुजरो, नीचे पानी चला लोहित रिवर का वेरी फास्ट. उस एरिया में था मैं पोस्टेड. एंड आई वेंट फॉर पेट्रोलिंग ऑन चाइना बॉर्डर फॉर अबाउट 10-12 डेज. उस टाइम मेरी 6 दिन की सर्विस होगी. 15 दिन का पेट्रोल था ये चाइना बॉर्डर पे. एंड वहाँ पे इतना विजिबिलिटी नॉट इवन 5 फीट, इतने जंगल. एंड जोंक्स होती हैं ऊपर से गिरती थी, देख के पूरा ब्लड से शक्कर लेती थी. जब रात को रुकते थे तब देखते थे जूते भरे हुए खून से, ये करके. ये 15 दिन का था. एंड जब वापस आना था तो लोहित रिवर बीच में गुजर रही थी. हम इस साइड थे, हमारी यूनिट इस साइड थी. एंड 2 पेड़ों पे तार बंधा हुआ था जी. एंड उसको हमें क्रॉस करना था उस साइड जाने के लिए बाय मंकी क्रॉलिंग. तो पूरा पिट्ठू एंड स्टेन गन पूरी पीछे, एंड हमने उस स्टेन पूरे बजे के साथ ये मंकी क्रॉलिंग करके पूरी और लोहित रिवर क्रॉस की. अबाउट तार करीब था वो वायर, थिक वायर, करीब 500 मीटर हमने क्रॉस किया ऐसे.
वो था बड़ा याद। एंड वी टू गो फॉर, वहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे, मिसमी, दे कॉल्ड इट मिसमी ट्राइबल्स, एंड दे हैव नॉट सीन एनीथिंग। हम जाते थे आर्मी वाले पेट्रोलिंग, तो उनको दे देते थे, नमक दे दिया और कुछ दे दिया खाने पीने के लिए। देन हाउ दे हैव नॉट सीन एनीथिंग। जंगल में रहते थे, तीर कमान से शिकार करके वही कच्चा पसा खा लेते थे, ऐसे एरिया था। देन सेकेंड इज अबाउट माई पोस्टिंग टू ले, हाई एल्टीट्यूड एरिया, वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है। वहाँ भी हमने देखा जो कारगिल का वार हुआ था, आई वेंट टू कारगिल, पूरी उस एरिया भी गए थे, एंड बटालिक सेक्टर जहाँ की एक्चुअली हुई थी, एंड वहाँ भी निशान थे जहाँ के उनके गोलियों के, पाकिस्तान के गोलियों के निशान, ये सब चीज़ें। एंड जो एक्चुअली जो कारगिल का 62 वार तो ऑफ कोर्स वहाँ पे नेफा टाइप में हुआ था अरुणाचल में, बट कारगिल का वार जो वहाँ हुई थी, टाइगर हिल वगैरह, वो हमने सब देखी है वहाँ पे जाके। एंड मैं तो मेरी फैमिली के साथ रहा था ले में। -30 टेम्परेचर हो जाता है। मेरे दोनों बच्चे ले में पढ़ रहे थे सेंट्रल स्कूल में, एंड मेरी वाइफ वहाँ स्कूल में पढ़ाती थी ले में। अल्टीट्यूड ले का है 12,000 के करीब होगा ऊंचाई, एंड ठंड होती है काफ़ी वहाँ पे। एंड वी हैव सीन द हाईएस्ट मोटरेबल रोड 18,500 खुदुंगला पास, वेयर वी क्रॉस वेंट टू बेस ऑल्सो, चियाचन का बेस में भी हम गए हैं विद फैमिली, आई एम सेइंग। तो ये एरिया जो कि मैं सिविल में होता तो मैं देख नहीं पाता ये एरिया, सारी चीज़ें। सही बात है। ये रह के हमने देखा है, वो भी देखा है। अरे एक मैंने जैसे आपको मैंने बताया, कोर्ट मार्शल, हाईएस्ट कोर्ट मार्शल आई हैव अटेंडेड एज ए जज एडवोकेट ऑफ द इंडियन आर्मी, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल, and that was a very interesting experience. And 7 lieutenant general were the members of the court martial, serving lieutenant generals. अगर पॉसिबल होगा तो वो फोटो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अगर स्क्रीन पे। जी, तो ये कई है। एंड आफ्टर द इंटायर 35 years which I spent in the army, entire thing was very adventurous, and exactly I miss my army days. नहीं, ये बात तो सच है। And in next birth also, I would like to be a soldier. एग्जैक्टली तो मैं जब अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था कि मैं सर से क्या सवाल पूछूं, तो मेरी टीम ने मुझे यही बोला था कि एक आर्मी ऑफिसर से ये पूछना कि उसके लाइफ के बेस्ट मेमोरीज क्या हैं, इट्स लाइक अ क्राइम, बिकॉज उनके लिए हर एक दिन एक मेमोरी की तरह है। दे मेक मेमोरीज एवरी डे अनलाइक अस, बिकॉज हम वेकेशंस का इंतजार करते हैं, एंड देयर एवरी डे इज एन एडवेंचर, देयर एवरी डे इज एन एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी मच रिफ्लेक्टेड टू द पर्सनैलिटी इटसेल्फ, जो कि सर की हम देख के ही समझ सकते हैं कि दिस इज व्हाट यू बिकम आफ्टर बिकमिंग अ जैग ऑफिसर और सर्व इन द इंडियन आर्मी। सो यहाँ से हमें केवल एक मोटिवेशन लेना है और हमें समझने की कोशिश करनी है कि कैसे हम अपने लाइफ को चैनलाइज करके और डायरेक्शन देके एक बहुत अच्छी और एमिनेंट सर्विस में सर्व कर सकते हैं। और एक बात सर अपने सेशन में भी कह रहे थे, मैं यहाँ पे भी कोट करना चाहूँगा कि आर्मी आपको केवल सर्व करने के लिए पैसे नहीं देती, फिट रहने के लिए भी पैसे देती है, एंड फिटनेस इज अ की, फिटनेस इज अ मस्ट। एंड वी नो द फैमिली, द वाइफ, चिल्ड्रन ऑफ आवर subordinates by name, by everything we know. That is the reason they have complete faith in us. And when we pass out from the Indian Military Academy, etc., वहाँ पे last pug कहते हैं, वहाँ लिखा होता है, the welfare, safety and security of your country comes first. Correct. Always, every time. Safety and comforts of your men you command. Correct. Come next. Your own safety and comforts come last every time. Every time, absolutely. Last every time. So earlier in olden days, when officer used to go on leave, say 2 months, 1 month he'll go to all those nearby villages where soldiers are staying to inquire about welfare of their families. Correct. Then he'll come to rest 1 month he'll spend with his family. With his family. Absolutely. So welfare of the troops is very, very important in the army, and the officer leads by example. Absolutely. It's not that officers send subordinates ahead. It's not so. Correct. Officers leads by example. Officer leads. Absolutely.
एंड सर थैंक यू सो मच अपना टाइम Thank you, देने के लिए। thank you इससे very पहले कि हम much. इसको My रैप अप pleasure. करें, आप कुछ आखिरी मैसेज अगर हमारे लर्नर्स को देना चाहें, कुछ आखिरी वर्ड्स उनको बताना चाहें, कुछ वो जो मोटिवेशन के तौर पे ले जा पाएं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लॉ इज़ a 5 years कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स और 3 year डिग्री कोर्स। या तो 5 साल आप अच्छी तरह पढ़िए, डिवोट योर फुल टाइम, देन enjoy your remaining life. Or you waste your time 5 years in university and then keep on suffering throughout your life. यही टाइम है आपको पढ़ने लिखने का. I'm not saying that you become a bookworm. Out of 24 hours, study 8 hours, sleep for 8 hours, and friends के साथ मस्ती मारो for 8 hours. Then only personality proper develop होगी. In addition to studies, take parts in sports activities, have a good hobby, constructive hobby. That is so that you utilize your time, utilize your spare time properly, and must develop the habit of reading. Not only reading law books, read other books also. That's how we call it the learned profession. Why learned profession? This is how we call it learned profession, because we have to study all the things. You must be worldly wise in life. Worldly wise तभी बनोगे when you study various subjects. Not in law, other subjects also. Worldly wise बनिए. That's why it is known as that you have to work throughout. When you come back from your chamber advocates, they go to their house not because their work is over, because it's time to go home. Law is a jealous mistress. You must remember it. Law is a jealous mistress. And for that you have to work hard. Nothing else. That's what all I want to say. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving your time, and it was really great talking to you. Hopefully, we will engage more Yes. sooner, Yes, and sir. we will definitely would like to invite you. The dates are not yet decided, the things are not yet decided, but definitely मैं promise कर रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा सर को आप सभी learners के साथ connect करने की, जो जैक के लिए एस्पिरेंट कर रहे हैं। हम कुछ एक सेशन लें ऐसा जहाँ पे जितने भी जैक के एस्पिरेंट है वो डायरेक्टली सर से बात कर पाएं, सर के सेशन को अटेंड करके इस जर्नी में आगे बढ़ पाएं। Thank you so much, learners. Have a very good day and see you all.